सैमसंग का S22 अल्ट्रा फ़ोन है जिसके अंदर प्रॉब्लम है CPU का। आप USB 73 में देख सकते हो 0.56 एम्पियर ले रहा है। कई दफ़ा फ़ोन ऑन भी हो जाता है, कई दफ़ा फ़ोन रिस्टार्ट होता है। उसके अंदर CPU का प्रॉब्लम है। तो चलिए CPU को रिपॉल करके देख लेते हैं।
सीपीयू को रिबॉल कर लिया है। एक बार हम फ़ोन को चार्जिंग में लगा के चेक करते हैं कि क्या हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। मैंने फ़ोन को, ये देखो चार्जिंग का लोगो आ गया। फ़ोन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, आप देख सकते हो। ये मैंने फ़ोन को ऑन कर लिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कोई नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।